Hello everyone, it's a pleasure to be back again at Siribat. I'm your host and co-founder of Siribat, Pawan Kumar, saying a big hello after a long time. The last time we recorded a podcast, it was a long while ago, and after that we had a lot of other tasks which we could not, due to which we could not dedicate much time to Siribat. But it's a pleasure to see you all again, and it's a very exciting year this is going to be, and to talk about a lot of we have always talked about a lot of youth related concept in this podcast. So today we'll talk about what every youth is very keenly waiting for, to get some money in their pockets. And to do that, a lot of people are always trying to put in talk about finance and all that. So for today's podcast, don't miss it out, watch it till the end. So we have Manpreet Singh, who is now pursuing his MSc Finance from in Queen's University in Belfast, which is in Northern Ireland. Prior to that, he also worked as an assistant editor at Eurofinance, which is a part of Economist Group. I'm sure everybody must have heard of the Economist. So Manpreet is going to give us, he'll just dive straight into the topic about what he wants to talk about. So Manpreet, over to you. Why finance? And just let us know what you want to share your thoughts about. Go ahead. Thank you so much, Pawan, for having me here today. So basically, let's start with why finance. So everything is about money today. In today's life, without money, there's nothing. So whenever the person says money is not important in your life, you should have from them actually. To be very honest, I started my journey as in the field of economics. Then I worked as an assistant editor with the Economist, and there I used to write on the treasury management, cash management, working capital, acquisitions, all that. And over there, I thought, if I've done economics, why not pursue finance and get into vertically up from here? So that's the reason why I moved into finance, started doing MSc Finance, and with that, I'm also doing FRM, which is Financial Risk Management, as a separate course also. And the topic we are today choosing is personal finance. So one of the reasons for choosing personal finance is the word itself has person. In a sense, the personal finance from me in your personal finance or any other person's personal finance is very different actually. The perspective is very different. The way you see money, the way I see money, the way other third person will see the money is very different thing. Because we have culturally different backgrounds, economically, socially, everything is very different. But there's a set of norms in the ecosystem that if one should follow it, they can have a very good life with the money. But that's a very basic steps. So today we are going to see how these basic steps in a life the one person can achieve to, to actually achieve a financial independence. One of the things which actually jerked the personal finance is COVID. Before COVID, which I think the most of the youth in India was very lenient about their personal finances. Like if they used to earn like 100 rupees and they used to spend like 90, 98, and sometimes even take a credit also. They had a rolling credit on the credit cards, on the bank money, and this new concept called buy now pay later, which is actually sucking their savings out of it. The people are not actually understanding that how credit cards, how their savings, how the investment parts, how their buy now pay later things are affecting their psychology of money and their investment pattern journey pattern journey journey patterns. So actually, we'll start with how COVID has changed the perspective of finance for the youth today. So before COVID, how I explained it, like the people had different perspective about the money. Right after COVID, when the people started losing their job, they started to realize they don't have money to support their next 6 months, next 5 months during the lockdown. Even during the lockdown, corporations were actually laying off people. They didn't have the future perspective out of it, like how they should employ the employees, in a sense, how they should give them money, how should they preserve the capital and all the things. And एक अच्छी बात हुई है इस चीज कोविड में कि लोगों को कम से कम समझ आया है कि पर्सनल फाइनेंस की अहमियत क्या होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस इन देयर लाइफ. एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस एक तरह कॉम्पोनेंट बाहर निकले तो पता चला है कि कई बार सेविंग से इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस लेना, बट पहला स्टेप तो हमेशा सेविंग ही होगा.
Your first step towards your financial independence should be your savings. And then you move towards insurance, you move towards credit, you move towards money management. If I may, And the if I first, may, if I may. yeah, So, sure. guys, whoever listening, take note of this. The first step to financial independence is saving. So, don't spend wherever you want your money to be spent on. Just wait for it. Make sure you save first, and then you go as per the steps that Manpreet is going to run us through. So, back again to you. There's a very good quote by Warren Buffett, which actually in a sense, he says that कि जब तुम कोई चीजें खरीद रहे हो ना, खरीदो सोचने से पहले, नहीं तो तुम्हें वही चीजें बेचनी पड़ेंगी बाद में जाके। तो एक एक जर्नी होती है हमेशा हर चीज की, जैसे तुम एक जर्नी लेते हो, जैसे तुम्हारी करियर जर्नी होती है, लाइफ जर्नी होती है, ऐसे फाइनेंशियल जर्नी होती है तुम्हारी लाइफ में। एंड फॉर एवरी स्टेप देयर इज अ डेस्टिनेशन एंड देयर इज अ जर्नी। डेस्टिनेशन इज योर रिटायरमेंट, ऑब्वियसली। आफ्टर रिटायरमेंट तुम अपने बच्चों पे डिपेंड तो नहीं रहना चाहते। वी हैव ऑल सीन बागबान, तो उसकी मेमोरीज तो हमारे बहुत माइंड में बहुत अच्छे से भरी भरी पड़ी है। बागबान तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। एंड इसका एक अच्छा वे था कि कोविड में ना लोगों ने एक पहली बात तो चूज किया है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज अनसर्टिनिटी में तुम्हारा एक तुम प्रीमियम पे कर रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस का मतलब समझे, तुम्हारा एक्सपेंस है जो तुम्हें सेफ गार्ड कर रहा है एक फ्यूचर अनफोर्सेबल इवेंट के लिए। होगा नहीं होगा, खुदा ना खास्ता कभी ना हो तुम्हारे साथ, पर हो गया तो तुम्हारे साथ एक कंपनी बैठी है, कॉर्पोरेशन है जो तुम्हें बचा लेगी उस इवेंट में। And for that, you pay a premium amount for that. And then came a life insurance. What if you die? Your family is sustained. I'll give you a real life example. मेरे एक neighbor है, they took a loan of like 70 lakh rupees for their house. And this was like 2 years before the COVID. They were paying EMIs. उनकी पूरी फैमिली में एक ही पर्सन अर्न करता था। And suddenly that person went out in the COVID. COVID हुआ उनको, then they went. Now the problem is the wife and the spouse and the children don't earn. अब करें क्या? ईएमआई पे नहीं करेंगे तो घर भी चला जाएगा। प्रॉब्लम ये थी उनके पास ना लाइफ इंश्योरेंस थी ना कुछ था। अब यहाँ पर एक समझ आता है कि तुम जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो ये नहीं कहते कि मैं मुझे क्या मिलेगा। कई लोगों का तो ये क्वेश्चन होता है, सम पीपल डू हैव दिस क्वेश्चन, इफ आई एम पेइंग फॉर समथिंग आई वोंट गेट इट। मैं नहीं मरा तो क्या फायदा? कई बार तो मैंने ऐसे सुना हुआ है, कई लोगों को बोलते हैं कि अगर मैं नहीं मरा तो क्या फर्क पड़ेगा। बट ये नहीं समझते अगर मैं मर गया उसके बाद मेरी कम से कम फैमिली को तो पैसे मिलेंगे, वो तो सस्टेन कर पाएंगे। दे डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग्स। एंड अगर बाई चांस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस बंदे ने 1 CR की यानी 1 करोड़ रुपीज की यानी ऑलमोस्ट 10 मिलियन रुपीज की उन्होंने एक इंश्योरेंस ली होती, द फैमिली वुड हैव पेड ऑफ 70 लाख, घर में पे रह सकते थे एंड 30 लाख अपना सस्टेन कर सकते थे थोड़ा टाइम पीरियड के लिए, बाद जब तक वाइफ और या उसके चिल्ड्रन मतलब जॉब नहीं मिल जाती उनको, तब तक सस्टेनेबल था ना वो एनवायरमेंट। बट अगर नहीं है तो सस्टेन कैसे कर पाओगे? बट एक ना एक बहुत अच्छी बात है कि कई लोग तो ये पूछते हैं कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है, पहले ये तो बताओ मुझे। मैं बोलता कि ये मनी मैनेजमेंट, दिस इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। द पीपल हैव नो मनी, द पीपल हैव लेस मनी, द पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, they all need money management. To be very honest, they all need money management. And there's a cycle of income and expenditure. For example, at the first week of your job, you get a salary, and that's a salary from the previous month. Because you always start from the expenditure first. Let's say an example. You start your job from the 1st January, the company won't pay you pre-hand. They always pay you in the first week of February. For the month of January, you have to pay your expenditure, which is your not there's no income. Let's assume you don't have any income, zero expenditure at the start of the January first week. You start your job, you have to buy your clothes, shoes, apparels, transportation, your food expenditure, your house rent, everything. वो तो credit पे कर रहे हो. But you have a certain assumption that in the first week of February, I'll get XYZ amount. But the thing is, you won't spend over that XYZ amount. You always try to be below your power levels. And this is all about the income and expenditure cycle. So your first step
in your life, I guess your first step in your career, in your income path is always expenditure. And you should understand the expenditure first rather than understanding the income first. तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है मेरा. You're paying for your house rent, you're paying for your utilities, you're paying for your food, you're paying for your any other thing, your leisure pleasures. Understand the expenditure first. And then I say, then understand income. ये पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए. और उसके बाद जब तुम्हें मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि मनी मैनेजमेंट करनी कैसे है हमें, पहले तो हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, हमें फिर इनकम मिली है, हमें फिर एक्सपेंडिचर करना है. देयर इज साइकिल गोइंग ऑन. तुम पहले तो हमेशा बहुत मिनिमम से स्टार्ट करोगे, एकदम तो एक्सपेंडिचर तो नहीं करोगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी तुम्हें एक्सपेंडिचर करना है. So like I'll take an very good example. Let's say you're gonna get like 100 rupees per month. Very basic example. 100 rupees per month मिलने वाला तुम्हें. And तो पहले महीने तो ये सोचोगे कि मेरा खर्चा कितना होने वाला है. I'll assume कि 60 या 50 rupees तुम्हारा खर्चा होगा. Not more than that. But still the next month you are saving 40. बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 50 का खर्चा होने वाला है, तो सेविंग तुम्हारी 40 की है. अभी भी तुम 10% मतलब 10 रुपीज डेफिसिट में हो, यानी 10% डेफिसिट में, तो करोगे क्या? यू टेक अ क्रेडिट. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. एक बार तुमने क्रेडिट ले लिया ना, दैट इज लाइक अ ड्रग्स. क्रेडिट इज लाइक अ ड्रग. दैट्स इजी मनी. Guys, take a note of this. Credit is like a drug. Don't get too much addicted to it. There is a point, there's a limit, which he's going to now explain to us in bigger detail why it's so. Go ahead. बट व्हेन आई से इट्स लाइक अ ड्रग, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. विल कवर दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट कि अच्छा बुरा कैसे होता है क्रेडिट भी. बट स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ क्रेडिट बुरा है जब तक तुम उसकी समझ नहीं लेते. मतलब यू इफ यू Yeah. डोंट हैव द So अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट ना, दैट्स लाइक अ बैड ड्रग, नॉट अ गुड वन. एंड पॉइंट ये है, ये 40 का तुम्हारा सेविंग्स पड़ी थी, एक्सपेंडिचर आ गया 10 का. बट तुम जैसे रोलिंग करते रहोगे ना, तुम ये समझोगे कि तुम्हारा एक्सपेंस तो कांस्टेंट है, बट योर इनकम इज राइजिंग. इन अ सेंस योर सेविंग्स इज राइजिंग, इनकम इज कांस्टेंट, एक्सपेंस इज कांस्टेंट, योर सेविंग्स टेंड्स टू राइज. तुम्हारा एक पहला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस, जैसे इंड्यूस्ड. अभी ऑटोनोमस में क्या होता है कि तुम्हारे पास ना इनकम थी ना सेविंग थी, तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कहीं से तो आएगा ना. एज यू स्टार्ट योर ग्रोइंग, एज यू स्टार्ट योर इनकम पाथ, तुम्हारे एक्सपेंडिचर तुम्हें पता चलेगा मैं कहाँ कैप करने मुझे. You tend to realize where to cap your expenditure. Where is my pivotal point where I need to stop my expenditures, then start my savings. And next part comes सेविंग कैसे होती है. पहले ये तो मुझे बताओ कि सेविंग करूं कैसे. मेरी इनकम तो हर बंदा इनकम कमा लेगा, कमानी ही पड़ेगी बेचारे को. So the general understanding for people, if they talk about savings, is always on fixed deposits in banks or other, basic deposit, recurring deposits, sometimes time deposit, it's just like that. So it says other, if you go beyond that, what is the general, way to save? What is the ideal way to save? If there's any for a person who is just entering the job market. For those who are listening, for example, let's say they are all between 18 to 24, or let's say they're 30. So what is the ideal way? How do they start saving? So there are multiple ways to start actually. पहला start in my personal view and everyone actually around the market says कि पहला अपना emergency fund build करो. Start saving for your emergencies first and then उसके बाद सोचना कि मुझे saving या investment करनी है कि नहीं करनी. पहले अपना emergency build करो. For example, I'll just say nobody has seen the future. The person who has started a job in 2018, 2019 has not seen the future in 2020. COVID आ जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी, कुछ भी हो जाए. If the person actually has invested in January of 2020 in the stock markets, उसकी आधी वेल्थ तो इरोड हो चुकी थी मार्च, बिकॉज द स्टॉक मार्केट ड्रॉप्ड. उसने इमरजेंसी फंड बिल्ड नहीं किया, द पैनिक मोड में आ गया, उसने सेल ऑफ किया. द एसेट्स व्हिच हैव should appreciated in November or December 2020 to the higher levels, उसने हाफ पे सेल कर दिया बिकॉज ऑफ पैनिक मोड में आ गया. तो पहला स्टार्ट होता है इमरजेंसी फंड बिल्ड करो. इमरजेंसी फंड होता क्या है, तो एक ड्रॉबैक क्या होता है, इमरजेंसी फंड है क्या. इमरजेंसी फंड का एक बेसिक रूल है, यू सेव द अमाउंट ऑफ मनी विच इज नीडेड फॉर एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 3 or 6 months डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई अर्न लाइक 100,000 rupees per month और मेरा एक्सपेंडिचर होता है अराउंड 60,000 rupees, तो मेरा
एक बेसिक assumption होगा कि 60,000 नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अगर मुझे कोई जॉब चली जाती है मेरी, तो मेरे पास 1,80,000 रुपीज होने चाहिए, 180,000 रुपीज होने चाहिए मेरे पास, ताकि मैं उस पीरियड में एक नई जॉब ढूंढ सकूं, मैं नई लाइफ स्टार्ट कर सकूं। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर तुम्हारे इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो और पैनिक मोड में आ जाओगे, तो अपने बिलो मार्केट लेवल पे भी जॉब लेनी शुरू कर दोगे। यू आर ब्रेकिंग योर ओन वैल्यू by not creating your emergency fund. Pawan, if you go into job market without any savings, without any backup plan, na, your mind will be like, "Jo milta mein le lo. Whatever I'm getting in the market is my true value," which might not. तो पर्सनल फाइनेंस का एक पहला बेसिक रूल है, तुम्हारी पहले तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इरोड करता ही करता है, तुम्हारे पास कोई मैनेजमेंट नहीं, मनी मैनेजमेंट नहीं है। नेक्स्ट इट इरोड्स योर वैल्यू। तुम जितने मनी कॉन्फिडेंट हो मार्केट में, तो मार्केट विल टेंड टू बी इन इक्विलिब्रियम। हमने पहले ही सीखा था इकोनॉमिक्स। तो तुम मार्केट को तो बीट नहीं कर सकते, तुम मार्केट को तो बीट नहीं कर सकते। पहले अपने आप को ठीक कर लो, इससे अच्छा पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि मेरे पास होने क्या वाला है। अगर मार्केट को बीट नहीं कर सकता, इन लॉन्गर टाइम वी कैन बीट द मार्केट, वी स्टे इन द मार्केट। तो पहला रूल है कि तुम इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। उसके बाद हम सेविंग्स की तरफ जाएंगे, एंड विल सी कि सेविंग्स कैसे होती है। हम विल टॉक अबाउट द सेविंग्स फर्स्ट। Yeah, so you talked about the need to have an emergency fund. From based on this, if you take a realistic perspective, some tend to have this fashion to put their money in gold, and despite that, even for those who are entering the job market, they not sometimes some of them whom I know personally have invested some amount of gold. What is the craze about gold? And most are aware that it's a very stable investment option. It never, it only goes up. Its value only goes up. Is that true? Can you just give one pointer about it, and then we can move further to developing this talk more and why savings and all that. Yeah. Before talking about gold thing, there's a obsession about gold in India. True obsession about gold in India. There's no denial about it. What I still don't understand what is the craze about gold in India. And that too physical gold. Neither do I, neither do our viewers, neither do I, neither do our viewers. So that's why I asked you that. So the thing is, we have seen our parents, we saved such an amount of money, let's buy gold. And they tend to buy a physical gold. And problem अलग, physical gold की अलग ही प्रॉब्लम है, उसको बाद में हम थोड़ा एड्रेस करते हैं। विल स्टार्ट कि तुम सेव कहाँ कर सकते हो, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, उसके रिस्क क्या है, रिटर्न्स क्या है। विल टेक अ लॉन्ग टर्म एवरेज अबाउट दिस। We'll start from 80s, 90s, then go towards 2000, 2010, 20. इस पैरामीटर्स पे बात करते कि हाउ द जनरेशनल शिफ्ट हैज हैपेंड। तो मेरे ग्रैंडफादर थे ना, दे स्टार्टेड अ रेकरिंग डिपॉजिट कि एवरी मंथ 500 रुपीज, 1000 रुपीज इन बंदों के नाम पे हम सेव करते रहेंगे। सेव करते थे, देयर इज अ कॉर्पस अमाउंट एट द एंड ऑफ 18 इयर्स, 20 इयर्स, तो एक लमसम अमाउंट मिलती थी व्हिच इज यूज्ड टू बी फॉर द मैरिज, एजुकेशन, सेटिंग अप बिजनेस फॉर योर चाइल्ड, एंड ये सबके लिए यूज होता था। एक होता था कि यार लमसम अमाउंट कहीं से हमें आ गई है, हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। पर प्रॉब्लम इज कहीं वहां पर ना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, या फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। तभी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का इतना कॉन्सेप्ट इतना वाइडली अवेलेबल नहीं था। अगर था तो लोग सोचते थे कि गैम्बलिंग है। They used to think this is a gambling actually. Just because some lunatic person in the market has done something wrong, वो एक मार्केट में न्यूज आ गई है, एक बहुत बैड ऑनर्स पड़ गया चीज के ऊपर। हर्षित में स्कैम 1992 का ले लो आप, वो एक इस मार्केट में केतन पार्क का स्कैम हो गया 2003 में। ये एक प्रोलॉन्ग एक स्कैम चलते रहते हैं, बट दैट डजंट मीन कि तुम मार्केट में इन्वेस्ट ना करो यार। देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, बट बिफोर दैट तुम पहले समझो कि वो हो क्या रहा है मार्केट में। आई डोंट से कि एफडी बेकार है, रिकरिंग डिपॉजिट बेकार है, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये और बेकार भी है। उसके पहले भी ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो, यू वोंट पुट योर इमरजेंसी फंड इन मार्केट्स बिकॉज मार्केट्स आर वोलेटाइल ऑब्वियसली। सो एक थंब रूल है इमरजेंसी फंड्स का, 25 25 25 25। रूल क्या है एक्चुअली, यू कीप योर 25% ऑफ योर इमरजेंसी फंड इन कैश। घर पे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कैश है। द नेक्स्ट 25% शुड बी योर सेविंग्स अकाउंट, जहां तुम्हें 3 या 4% का करंट रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा।
Even on your emergencies, you're getting something. The next 25% should be on a bond markets. That should be the securest amount. कि कहीं तो bond market में पड़ा हुआ है, which is earning more than the inflation or at par of the inflation, but greater than the your savings account. And then there is fixed deposit. इसको तो पड़े रहने दो यार, मैं इसको हाथ ही नहीं लगाने वाला. So in other three ना, you can take the amount within a week. Cash readily available है. Savings deposit, go to your ATM card and withdraw the money, or put a check in the bank and you withdraw your money. Bond market in next 3 or 5 business days you can withdraw the money, but FD तोड़ोगे तो interest भी नहीं मिलेगा. So that's a psychological value कि तुम अपने investments को, even in emergency funds, you keep your allocation to different things. Don't keep cash because वो inflation खा जाएगा, because उसका कोई return नहीं है year बाद. Savings amount में almost like कुछ तो मिल रहा है यार. You're getting something out of it. And then comes कि तुमने emergency fund build कर चुके अब तो. You've done your things. But before touching that part कि कहाँ investment करना है, I'll talk about this rule called 50-30-20. For example, if you earn like 100 rupees per month, I'll take 100 rupees, 100 pounds, $100, whatever you are earning, I'll take a very small amount. You have a rule that 50 should go towards your needs. What are your needs? House rent, food, utilities. These are your permanent needs. What we say in Hindi language called roti, kapda और मकान. ये मेरी जरूरत है, मेरी बेसिक नीड है मुझे सस्टेन करने के लिए लाइफ में, या मुझे आगे बढ़ने के लिए. देन कम्स योर वांट्स. वांट्स क्या है? गुड शूज, गुड क्लोथ्स, एक्स्ट्रा गुड क्लोथ्स. पहले क्लोथ्स हम ले चुके थे, अब क्या एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले रहे हैं यार. एक शर्ट थी मेरे पास, मैं दो और ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे यार रोज रोज वो नहीं पहननी यार, ये नहीं करना, मैं एक डिफरेंट ऑरा चाहिए. गुड स्पेक्स, कई बार तो ये होता है यार मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा डिजाइन चाहिए. वो तुम्हारे वांट्स में आएगा, नीड्स में नहीं आएगा. नीड इज लाइक लेंस कार्ड पे मैं गया, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज का मैंने एक स्पेक्स ली, एंड दैट इट इज गुड. अब मैं बोलूँ मुझे रे बैंक के चाहिए, जॉन जैकब के चाहिए, एंड शिनाल के चाहिए, तो एक अच्छे से तुम बना रहे हो उस चीज को. देन कम्स योर वांट्स. अब जो बच जाता है ना, वी से कि सेविंग्स कर लो. 20% शुड बी योर नॉर्म की मैं आउट ऑफ 100 रुपीज आई एम ऑलमोस्ट लिविंग 20% तो मैं सेव कर रहा हूँ. बट द थिंग इज, वॉरेन बफेट सेज एंड एवरी अदर इन्वेस्टर इन द मार्केट सेज कि पहले तुम सेव करो. Consider your savings as your first expenditure of your salary, your income. जब तक तुम सेविंग्स को एट अर्ली स्टेज पे एज एन एक्सपेंस नहीं समझोगे तब तो सेव ही नहीं कर पाओगे. तुम ये सोचोगे कि यार मैं एंड ऑफ द मंथ में जो बच गया है मैं वो सेव करूं. दैट इज योर बैड साइकोलॉजी ऑफ मनी. यू हैंडलिंग योर मनी वेरी रॉन्गली. तुम पहले सेव करो. इफ आई कंसिडर सेविंग्स एज माई एक्सपेंडिचर ना, तो मैं सोचूंगा ये मेरी सेविंग्स हुई नहीं है, और जो पड़े हैं ना वो मेरा एक्सपेंडिचर था, जो कहीं चले गए मुझे पता नहीं फिलहाल के, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो कहाँ करने विल सी टॉक अबाउट दैट लेटर. बट कंसिडर सेविंग्स एज एन एक्सपेंडिचर. तो तुम्हें ये पता नहीं है ये कभी बहुत अच्छी तरह तुम्हारे लिए काम भी आ सकती है चीजें. अब पॉइंट आता है कि मैंने सेविंग्स तो निकाल ली, आई हैव टेकन 20% ऑफ माई इनकम, तो मैं करूँ क्या? टॉक अबाउट कि इमरजेंसी फंड पहले बिल्ड करो, उसके बाद मार्केट्स में जाओ. I always say to any layman person, if you're going to markets, go through mutual funds first, because you don't have the expertise of the market. तुम्हें ये नहीं पता कौन से स्टॉक्स में पैसे डालें. You don't know how to invest in the stocks. You don't know how to put the money in a secure way. When to enter the market, when to exit the market, and कैसे strategies build करते हैं. The first step should be your mutual fund every time. And what's the best mutual fund? Index funding. Simple index fund में आप पैसे डाल दो. I'll just give one tip for the audience. So the main point here is that even if you're having an idea about stock market and you want to invest in bulk, the safest option first, as Manpreet says, go to mutual funds. Don't touch your stock directly, because if you want to have an idea of the market, I think I agree with that, because only the mutual fund managers, etc., will give you a certain idea about the market, and the expertise they will provide will help you understand the market first and in a better way. So yeah, go ahead. So there are different categories in mutual fund. Don't go into that. मैंने simple से एक बता दें कि index funding is the best starting way. Then there's something called balance funds, hybrid funds, equity funds, वो भी large cap, mid cap, small cap, वो बाद में जाएंगे. Because एक बार तुम एंटर कर जाओगे ना, तुम्हारे पे क्यूरियोसिटी आएगी
कि पढ़ने के लिए मैं करूँ क्या. So over the period of time, Nifty or Sensex has given around 10 to 12% in a long-term average, which has beaten everything, even the gold, I guess. तुमने अभी एंटर कर लिया म्यूचुअल फंड मार्केट, तुम सेव कर रहे हो, एस आई पी कर रहे हो. एस आई पी इज द बेस्ट थिंग. एस आई पी स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे. वो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऑटो डेबिट फीचर इज देयर. वो तुम्हारे अकाउंट से अपने चलेगा. दैट थिंक एज इन योर एक्सपेंडिचर. मेरी सेविंग्स चलेगी एक्सपेंडिचर में भी. कोई तो ले गया, मुझे बाद में रिटर्न दे देंगे वो बंदे मुझे. ये तुम समझ लो. नाउ आई टॉक अबाउट योर क्वेश्चन फर्स्ट कि गोल्ड से ऑब्सेशन क्या है. See, गोल्ड से ऑब्सेशन तो हर बंदे का है कि बिकॉज समझते हैं ये दिस इज अ शाइनी थिंग. दिस दे बिलीव कि जो मेरे हाथ में है ना, लाइक हाउ कैश हैज अ नोशनल वैल्यू, कि मेरे हाथ में है तो मेरी वैल्यू है. किसी और के पास है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता वो बंदा मुझे वापस देगा कि नहीं देगा. द सेम थिंग हैज अ वैल्यू ऑफ गोल्ड. If I have that gold in my hand, I have the security that this is my money, this is my wealth. Nobody can take it from me. If I give it to someone else or some markets or some bank, na, they can run away. There is a notion in our minds कि ये कोई तो ले जाएगा. कि गोल्ड से ये ऑब्सेशन है हमारा और कुछ नहीं है. एंड गोल्ड एक्चुअली बुरा भी नहीं है. ये गोल्ड तुम्हारी वेल्थ को प्रिजर्व कर रहा है. Over the long period of time, gold has given a return of like 5 or 6%, which in India is around the inflation, I would say 4 to 6% जो आरबीआई का एक ब्रैकेट है उसके अराउंड ही है. So you're not gaining from the gold, you're not losing from the gold. But that also is a question because तुम कब एंटर कर रहे हो गोल्ड में, कब एग्जिट कर रहे हो, that also matters. कई बार तो ये होता है कि जैसे जिस बंदे ने गोल्ड 2010 में लिया होगा ना, उसका एप्रिसिएशन ओवर द 10 year पीरियड इज 5%. बट जिस बंदे ने गोल्ड 2020 में लिया एंड देन ही सोल्ड गोल्ड इन 2021, उसका एप्रिसिएशन इज अराउंड 9-10%. बिकॉज मार्केट तो हेज कर रही थी, स्टॉक मार्केट्स एंड इक्विटी मार्केट्स एंड गोल्ड एज अ इनवर्स रिलेशन ऑलवेज, बिकॉज एक दूसरे को हेज कर रहे होते हैं. पॉइंट ये है मेरा कहना कि गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. फॉर एग्जाम्पल, if you're saving your 100 rupees, don't always go for the equities. If you have a near term plan or a mid term plan, for example, if I need the money in next 2 or 3 years, I won't go for the equities. I probably go for the bond markets because they have a stable thing, stable graph. If I'm investing for next 5, 8, 10 years, 15 years, then obviously it should be enough that you should go for the equities, go into market. So वहाँ volatility है, but over the period of time the market is going up. In a I'll shorter just period, yeah, I'll just add one bit for the audience. Equity is where you put your money as a percentage in a company. In bond market, you are lending a certain amount of money to somebody who is ready to, who is issuing bond, and you are giving a certain amount to them, and that in return you'll be given some percentage at the end of the period. So that's why there's something called GSEC, where government securities, etc., and RBI trades and all that. So we'll not go into all that. So now I think he's talked extensively about gold and why gold is having a certain amount of this shine. The shine is still the reason for gold to be putting investment. I'll add a counterpoint to that. Some might. This is from market perspective. From a household perspective, people invest in gold from my perspective or my understanding of household finance is that they use it as a security. And since against it's a sort of an emergency fund investment in that sense because they can use the gold to pawn against it and then they'll be able to get some money in emergency times. And this has been there for centuries now. And you have a local pawnbroker over there. You go to and give your gold ornament to him in return for a certain amount of cash equal to that value. This is one perspective also on why we continue to see a lot of investment in gold and in particularly accumulating of gold.